We have discussed 3 case studies: Guantanamo Bay in prison, Saudi Arabia, and last, which one? Kosovo incident. So you will understand कि why rights are important in our lives. Without rights we cannot do whatever we want to do. So it means rights are very important in our life. So today we will discuss about now rights in a democracy. यानी कि why rights are important in a democracy. The relationship of rights and democracy, यानी कि how they are related to each other. Democracy depends on the rights. Rights का मतलब we are giving the right to electing their representatives in a democratic form of government. In the last case study you have seen in the Saudi Arabia, people don't have any right. They cannot choose their leaders. They cannot adopt any particular religion. They have to adopt only Muslim religion. But in our country we have given this right. यानी कि right, our country is called a secular country. We can adopt any religion. We can follow any religion. So it means that's why rights and democracy are closely related to each other. If we are having rights in a democracy, we can express our ideas, views in the proper way, in a decent way. So it means rights and democracy are closely related to each other. Second point we see here, rights in a democracy. Assurance, not only paper. With rights we have not only right on the paper, but in reality where at least a minimum is guaranteed to everyone. लेकिन हमें मिनिमम कम से कम सब लोगों को इतनी गारंटी तो देनी चाहिए, एश्योरेंस देना चाहिए कि आपको ये राइट्स तो मिलेंगे. और ये राइट्स हमारे कहाँ मेंशन है? ऑल द राइट्स मेंशन्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ सी द डेफिनेशन. राइट्स आर रीजनेबल क्लेम. रीजनेबल मतलब लॉजिकली वी कैन से दैट इज राइट ऑफ ए पर्सन. रीजनेबल क्लेम्स है, हाउ वी कैन से दैट, एंड बाय रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी. फॉर एग्जांपल, अब मैं कह रही हूँ कि मुझे गाना सुनने का शौकीन है, हाँ मैं सुन सकती हूँ, लेकिन ये मुझे राइट्स नहीं है कि मैं उसका वॉल्यूम तेज करके रात के 12 बजे ऑन करूँ और उसे क्या रिकॉग्नाइज बाय सोसाइटी. क्या उस चीज को सोसाइटी पसंद करेगी? नहीं. यानी कि जो हम क्लेम कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए? हमारा रीजनेबल, लॉजिकली सही होना चाहिए. जैसे मैं कहूंगी हमें जो बोलने का अधिकार है, आई कैन एक्सप्रेस माई आइडियाज, व्यूज, यू कैन डू. पर ये क्या, अब मैं कहूँ कि मुझे तो गवर्नमेंट ने परमिशन दी है, राइट्स मिला हुआ कि आई कैन यूज एनी, बट कैन आई यूज द अब्यूज लैंग्वेज? मन चाहा तब मैं उसके साथ गाली गलौज करने लगी. क्या सोसाइटी रिकॉग्नाइज बाय सोसाइटी, क्या सोसाइटी उस चीज को पसंद करेगी? नहीं. क्या रीजनेबल क्लेम है? मैं कहूँ कि मुझे मेरे पड़ोस से 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए लाके गवर्नमेंट दे दे और मैं या किसी को चुरा के अपने घर में रख लूँ. ये रीजनेबल क्लेम्स नहीं कि मुझे अमीर बनना है. क्या सोसाइटी उस चीज को पसंद करेगी? रिकॉग्नाइज बाय सोसाइटी? नो. यानी कि राइट्स का मतलब कि राइट्स आर रीजनेबल लॉजिकली सही होना चाहिए. और किसके द्वारा रिकॉग्नाइज? यानी कि वट एवर वी आर डूइंग, यानी कि दैट वर रिकॉग्नाइज बाय द सोसाइटी. यानी कि सोसाइटी भी उस चीज को पसंद करे, पहचान करे कि रियली वट वी आर डूइंग. एंड और साइमल्टेनियसली सैंक्शंस बाय लॉज. और किसके द्वारा उनको परमिशन मिलनी चाहिए, गारंटी मिलनी चाहिए? बाय द लॉज. और इसीलिए बाय द लॉज मतलब जो हमारे राइट्स हैं वो कहाँ मेंशन है? ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे मेंशन है. तो नाउ व्हाई डू वी राइट्स इन ए डेमोक्रेसी? सस्टेनेंस ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि बेसिक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन मेनली 3 पॉइंट्स. राइट टू वोट. इन ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी हैव गिवन द पीपल द राइट टू वोट. It means if they don't have the right to vote, so then how will they choose their representatives? If they will not choose the representative, then how we will form the government? So it means, so that's why what is the main spirit of democracy? Right to vote. Second, right to express. Right to express means we can express our ideas, views from one person to another person, whatever we want to say. And right to form political organizations, yeah, we can say that political parties. If we will not having the right to form political parties, so then how contesting elections and how we will form the government? If we will not form the government, so how can we say that type of government is the democratic form of government? So it means these are the 3 main points that democracy depends on: right to vote, right to express, right to form political parties. Now we will go ahead. These are the basic things for the democracy. Now rights protects minorities from the oppressions of majority. Majority means जिसको ज्यादा बहुमत मिला हो, minority मतलब less, ये majority का मतलब ज्यादा. तो rights protect. अगर rights नहीं होंगे तो what will be happen? Majority क्या करेगी? Oppressions मतलब उसको
माइनॉरिटी को दबा कर रखेंगे। भाई अब वी आर इन द पावर, तो इट मीन्स वी विल यूज ऑल द पावर, बट हु विल प्रोटेक्ट राइट्स। तो राइट्स की मेन ड्यूटी क्या है? राइट्स प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज फ्रॉम द ऑपरेशंस ऑफ मेजोरिटी, ताकि मेजोरिटी अपनी पावर का क्या नहीं कर पाए, इनके ऊपर मिसयूज नहीं कर पाए। और उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा? राइट्स। राइट इंश्योर्स दैट मेजोरिटी कैन नॉट डू वट एवर इट लाइक्स। ऐसे तो मेजोरिटी कहेगी वी आर इन द पावर, तो इट मीन्स वी कैन डू वट एवर वी वॉन्ट टू डू, they can do no. So then who will ensure that majority cannot do whatever it likes? So then who will ensure to the minority group of people? Rights. Now third point we see, rights protect citizens against the government also. If we are thinking कि majority group of people oppressing the minority group of people, so then they can appeal, who will protect their rights against the government also, इनकी government will listen. But sometimes what happened, इलेक्टेड गवर्नमेंट में ऑल्सो अटैक्स द राइट्स ऑफ देयर ओन सिटीजन्स। कई बार क्या होता है, इलेक्टेड ही गवर्नमेंट अपने कंट्री के सिटीजन्स का राइट्स का उल्लंघन यानी कि इन्फ्रिंजमेंट कर देती है। जैसे हमने केस स्टडी में देखा था यूगोस्लाविया कंट्री के प्रोविंस कोसोवो, वहां पर इलेक्टेड लीडर्स था, फिर भी उसने क्या किया, आर्मी के साथ मिलकर अपनी ही कंट्री में जो दो ग्रुप में बटे हुए थे, सर्ब्स और अल्बेनियंस, यानी कि सर्ब्स वहां पर क्या थे, मेजोरिटी में, और माइनॉरिटी में कौन थे, अल्बेनियंस। तो उसके ऊपर क्या करना शुरू कर दिया, एथनिक मास स्केल, यानी कि लार्ज स्केल पर लोगों को मारना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब यहाँ तो क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ही अपनी कंट्री के जो सिटीजन्स है उनके राइट्स के ऊपर क्या कर रही है, अटैक कर रही है, उनके कानूनों का क्या कर रही है, सॉरी उनके राइट्स का उल्लंघन, इन्फ्रिंजमेंट। फॉर दैट पर्पज सम राइट्स नीड टू बी प्लेस्ड हायर देन गवर्नमेंट। इसलिए राइट्स को किससे और ऊपर रखा गया है, गवर्नमेंट से भी, यानी कि गवर्नमेंट से भी ऊपर किसको रख दिया गया है, राइट्स। नहीं तो क्या होगा, समटाइम्स गवर्नमेंट विल ऑल्सो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ आवर राइट्स। तो इससे बचने के लिए क्या कर दिया गया, सम राइट्स नीड टू बी प्लेस हायर देन गवर्नमेंट, इसलिए कुछ राइट्स को गवर्नमेंट से भी ऊपर रख दिया गया। नाउ इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द फंडामेंटल राइट्स वन बाय वन। थैंक यू। नाउ वी विल डिस्कस राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बिफोर दैट वी हैव डिस्कस व्हाट आर राइट्स, व्हाई डू वी नीड राइट्स इन ए डेमोक्रेसी। तो rights are sanctioned by the, यानी कि reasonable claim sanctioned by the society, or we can say that recognized by the society, and rights are sanctioned by the law. Sanction मतलब given the permission by the law. So it means rights, where it mentions, rights are mentioned in the constitution. So that's why we can say that rights are sanctioned by law. And why we are giving respect to each and everyone's rights? बिकॉज वी वर थिंकिंग, अगर हम एक दूसरे के राइट को अगर हम रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हमें क्या डर लगेगा, वी विल गेट द पनिशमेंट। तो दैट्स व्हाई वी आर गिविंग द रेस्पेक्ट टू ईच अदर्स राइट, यानी कि ताकि हमें कोई पनिशमेंट नहीं मिले, उस डर की वजह से हम क्या करें, एक दूसरे के राइट्स को समझो कि हम रेस्पेक्ट कर रहे हैं। तो राइट्स आर सैंक्शन बाय लॉ, मतलब राइट्स आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी डिडंट गेट द पनिशमेंट, तो दैट्स व्हाई वी आर गिविंग रेस्पेक्ट टू ईच एंड एवरीवन्स राइट्स। Now we will discuss about the, in the previous paragraph we have discussed simply what are rights. Now we will discuss some rights are fundamental, basic, without we cannot survive. To our life are given special status. They are called as fundamental rights. Why we have given the fundamental rights? Fundamental all round development of an individual is a right to freedom, right to speech, right to expression, right to move, right to life and right to work. These are the some fundamental rights without we cannot survive. So that's why these rights were called the fundamental rights. Or one thing more, fundamental rights are enforceable by law, यानी कि हम इनको कानून के द्वारा भी लागू करवा सकते हैं। The Constitution offers some 6 fundamental rights. Our Constitution provides how many rights? 6 fundamental rights that are listed in Part 3rd of the Constitution under Article 12 to 35. Total how many articles are there? 448. And how many part? 25 in the Indian Constitution. At present how many articles are there? 448. Or how many parts are there? 25 in the Constitution. So in which part we have given the fundamental rights? In Part 3rd or article total 448. But the fundamental rights are given in which right? 12 to 35. That is very important. So the Constitution offers 6 fundamental rights
that are listed in the part of 3rd Constitution under Article 12 to 35. Now we will see right to equality. First, fundamental rights. Right to equality. We will discuss in detail in the next video. Right to equality, Article 14 to 18. Right to freedom, given Article 19 to 22. Right against exploitation, given in which Article 23 to 24. And right to freedom of religion, given in which Article 25 to 28. And fifth, cultural and educational rights, Article 29 to 30. Last, sixth, right to constitutional remedies, and given in which Article 32. That right is very important. क्यों? अगर हमें 5 राइट्स हमें नहीं मिल रहे तो कहाँ पर हम किस राइट्स के थ्रू अपील कर सकते हैं कोर्ट में? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. इन next paragraph we will discuss about one by one. Firstly, we will discuss about the right to equality. Now we will discuss first fundamental right, right to equality, that is given in Article 14 to 18. In which article right to equality is given? Article 14 to 18. Right to equality means all are equal in the eyes of law. No one is above the law. That is the simple definition. Equality before law. It means law applies in the same manner to all. यानी कि in the eyes of law, all are equal. It means that no person is above the law. So it means in our country, who is above? Only law. No person is above the law. Because if you are thinking कि one person, if you are giving the chance to government की यानी president या prime minister, they were changing frequently after 5 years. But in our country, who is above? No one is above the law. And who is the supreme? Only law. All citizens are subject to same law. It means all citizens. Maybe you are poor and rich. If you have done the same crime, so it means both rich and poor will get the same punishment. That is the question arises. Some students ask. That is not possible. क्यों? क्योंकि rich लोग क्या करते हैं? पैसे फेंक कर अपना बेल पे बाहर आ जाते हैं और जो गरीब लोग रहता है वो जेल के अंदर रहता है. वो प्रैक्टिकल है, उस चीज को हम अभी नहीं करें. हमें तो ये समझना है कि जो हमारी कंट्री का जो रूल है कि ऑल सिटीजन्स आर सब्जेक्ट, जो भी पब्लिक है, टू सेम लॉ. जैसे एग्जांपल, प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो फेसिंग द ट्रायल. अगर प्राइम मिनिस्टर भी कोई क्राइम करता है तो उसको भी कोर्ट में किस चीज के लिए जाना पड़ता है? ट्रायल के लिए. जैसे हमारे कई प्राइम मिनिस्टर्स के एग्जाम्पल दे सकते हैं, नरसिम्हा राव एंड इंदिरा गांधी, उनको भी ट्रायल के लिए जाना पड़ता था. एंड सेकंड पॉइंट, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस. Sorry, we cannot discrimination on the basis of race. Race, what is the meaning of race? On the basis of color. कि you are black and white, we cannot discriminate. Caste, we cannot discriminate on the basis of caste. You belongs to the lower caste, you are SC, you are ST, you are OBC, you are forward, you are backward class. No, nowadays we cannot discriminate on the basis of caste also. Sex, we cannot discrimination on the basis of you are male and female. You are the male, so we will give you more power या more equality. No, both are equal, male and female. Or place of birth, यानी कि on the basis of the place of birth we cannot discrimination. For example, if we are thinking कि you born in Rajasthan, so it means you are having the more opportunities to getting the job या for any equality. No, all states peoples are having the same value. So it means we cannot discrimination on the basis of race, caste, sex or place of birth. Now access to public places. Access का मतलब होता है पहुंचना public places तक. Every citizen shall have equal access to public places like shops, restaurants, hotels and cinemas halls, and there shall be no restrictions with regards to their use. Now each and every person can use all the public places. There should be no restriction, यानी कि उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए. Regards यानी कि they can use all these public places, all people. But in the olden times, what happened? People couldn't enter in the temples. Women couldn't fetch the water from the well. Even lower caste, especially lower caste people, they couldn't enter in the temples, and women couldn't fetch water from the wells. So that types of discrimination we can see in the olden times. But nowadays, each and every persons are using all the public places. No discrimination. Employment are getting the job. Equality should be there in case of public job. Public job means government job. यानी कि equality should be there in getting the government jobs.
यानी कि there should be no discrimination कि you are poor, you are rich. It means you are poor, so you will not get the job. No, if poor and rich people are having the same qualification, so it means they will get the job, government job. So it means equality should be there in case of public job and in the government job. Ban on untouchability, that is the most important point of the right to equality, because in the olden time that was a curse, यह अभिशाप था हमारी सोसाइटी के लिए. Banning the practice of untouchability. Untouchability has been declared as an offense. In the olden times, we मतलब upper caste people were not behaving the properly of the lower caste people, especially SC and ST people. तो यानी कि they were not having the that time self respect. So that's why according to the law, what happened? Ban on untouchability. ये जो हमारा छुआछूत जो प्रथा थी इसको बैन कर दिया गया, इसके ऊपर टोटली प्रतिबंध लगा दिया गया. That is the most important, and that question sometimes asked in the competition also. According to which article that ban on untouchability are removed from the society? According to the article 17. So banning the practice of untouchability or untouchability has been declared as an offense. So we have discussed right to equality. Now we will discuss right to freedom. Now we will discuss right to freedom. Before that we have discussed fundamental right to equality. It means all are equal in the eyes of law. No one is above the law. There should be no discrimination on the basis of color, caste, sex and religion. Now we will discuss the second fundamental rights, right to freedom. Freedom understood, it means that is given in which article? 19 to 22. What is the meaning of freedom? यानी कि absence of constraints. Constraint मतलब there should be no foundation. We should be free. And by whom? Who will not give us the restriction on some matter, but some matters can give. यानी कि we don't want any foundation from any individuals or any from the government. यानी कि we want the free. But in the some cases government can restriction. Under Indian Constitution, all citizens have the right to, and according to which right to freedom. Freedom of speech and expression. That is the first right to freedom. Freedom of speech and expression. That right allows people to think freely and express their views accordingly too. It means people are free to criticize the policy of the government accordingly what they want to say. Nobody can stop it ki why are you criticizing the government policies, because now we living in a democratic form of government, so we can express our ideas and views, yani ki freely openly we can criticize the government policies. Second, assembly in a peaceful manner. Assembly matlab we can hold meetings, demonstrations and rallies, but these meetings, rallies and demonstrations should be held in a peaceful manner. यानी कि those who participation doesn't allow to carry weapons. यानी कि peaceful manner में अगर हमें कोई मीटिंग करना है, कोई हमें रैली करना है, we can do it, but without any weapons. ऐसा नहीं कि साथ में हथियार ले जाएं. No, peaceful manner we can organize this type of assembly या rallies. Third, form association and group. For example, workers in a work factory, they can form any work organizations, workers organization. For which purpose? To protect the interest of the workers. यानी कि इंटरेस्ट किसका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए? वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए they can form any association and groups, but that should be in a peaceful manner. Fourth and fifth point are closely related to, यानी कि move freely throughout the country. And in our country we are freely move from one place to another country. Reside in any part of the country. Move freely मतलब no is foundation कि why are you going from one place to another place, यानी कि why are you going from Rajasthan to Haryana या Haryana to Goa. No foundation. You can without any restrictions you can move from one state to another state. Reside in any part of the country. In our country we can reside मतलब live in any part of the country. If residents, for example Assam, people wants to live in the Hyderabad, या they want to live in Rajasthan, या they want to live in Kerala, they can live if he wishes to. अगर कोई पर्सन चाहे कि मैं ये स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट में रहना मुझे, तो they can live, no foundation. Practice any professions or to carry on any occupation. Now we are free. We can form and we can adopt any occupation. We can adopt any profession. We can adopt any business.
Nobody can say that you have to adopt only this occupation. No, now it is our choice. Nobody say that why are you have adopted, wish to do so. Yeah, they will say why are not wishing, you don't want to adopt. It is our own choice, we can adopt. But in the olden times, what we were looking, Dalits peoples, yeah, some ancient times only, they adopted the old occupation. यानी कि from that old occupations pass from one generation to another generation. यानी कि पीढ़ी में एक पोर्टर है तो सारी फैमिली को क्या बनती जाएगी पीछे, पोर्टर. यानी कि वो फाउंडेशन थी. बट नाउ डेज वी आर फ्री, वी कैन अडॉप्ट एनी occupations, या we can do any business activities. It is our choice. These are the 6 freedoms basically given by the Constitution, in which right to freedom, or right to freedom in which article, 19 to 22. Now some right to freedom comes with some reasonable restriction. भाई right to freedom, ये में right to freedom मिली हुई तो है, with some reasonable restriction, कुछ reasonable restriction के साथ है. ये नहीं कि हमने जो चाहे whatever we want to do we can do. No, there should be some reasonable restriction should be there. For example, जैसे मुझे अभी नाइट में कुछ सुनने का मन करे कि मुझे अभी म्यूजिक सुनना है और वो भी लाउड उस पे वॉल्यूम पे, तो आई कैन नॉट डू, क्योंकि इससे क्या होगा, क्या रिकॉग्नाइज बाय सोसाइटी, क्या सोसाइटी उस चीज को पसंद करेगी? नहीं. क्या मैं अब्यूज लैंग्वेज में किसी से बात करूं, क्या सोसाइटी उस चीज को रिकॉग्नाइज करेगी? नो. तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कुछ चीजों पर हमारे साथ. तो फ्रीडम इज नॉट अनलिमिटेड लाइसेंस. फ्रीडम ये नहीं कहती कि अनलिमिटेड लाइसेंस दे दे, भी हम तो फ्री है जो चाहे करें, वी कैन डू वट एवर वी वॉन्ट टू डू. मन में उसको थप्पड़ मार के आ गए, जिसको चाहे उसको गाली गलौज करके आ गए, डू वट वांट. योर फ्रीडम शुड नॉट कॉज पब्लिक डिसऑर्डर. आपकी फ्रीडम से किसी दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए, यानी कि दूसरे को ट्रेबल नहीं होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो. टू प्रोटेक्ट लार्ज इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी. इसीलिए गवर्नमेंट ने कि लार्ज इंटरेस्ट को, यानी कि लार्ज ग्रुप्स ऑफ सेक्शन को ध्यान में रखकर गवर्नमेंट कैन इम्पोज सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस. इसलिए कुछ फ्रीडम्स के ऊपर गवर्नमेंट क्या लगा सकती है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, क्लेम कर सकती है, पाबंदियां लगा सकती है, ताकि हमारी उससे फ्रीडम से किसी दूसरे को लॉस नहीं हो. आई होप यू अंडरस्टैंड राइट टू फ्रीडम. नाउ we will discuss the third fundamental rights, right against exploitation, in next class. Thank you.